एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति दूसरे इस पॉइंट पे क्लैरिटी है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के खिलाफ बाकी कास्ट के लोग डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन, मान लीजिए कोई पंडित है, कोई राजपूत है, कोई वैश्य कम्युनिटी का है, अगर वो डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के आधार पर, तो वो डिस्क्रिमिनेशन इस क्लॉज में कवर नहीं हो रहा है। हो सकता है कहीं और कवर हो रहा हो, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया आपको कि ऑब्जेक्टिव क्लॉज को देखेंगे तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं किया गया है, लेकिन एप्लीकेशन पे जब जाएंगे तो यहाँ ये कर दिया गया है। तो अभी दो दिक्कतें इसमें है। एक दिक्कत है, ये क्लैरिटी नहीं है कि ये जो कास्ट है, क्या एक कास्ट, शेड्यूल कास्ट का एक ग्रुप शेड्यूल कास्ट के दूसरे ग्रुप के विरुद्ध कोई बात कहता है, वो इसमें शामिल होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा कि मान लीजिए कि ओबीसी का एक ग्रुप है और वो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, और इसके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं, तो उस मामले में क्या होगा? और मुझे लग रहा है कि ये एक स्पेशल पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो मैं चर्चा कर रहा हूं, जो शायद कोर्ट को लगा कि हाँ ये पॉइंट तो सही है। अगर ओबीसी जो है और ओबीसी का एक व्यक्ति, शेड्यूल कास्ट किसी व्यक्ति का, मैं टीचर हूं, मान लीजिए मैं ओबीसी कम्युनिटी का हूं, और मैंने कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जानबूझ के किया, जानबूझ के उसको नंबर कम दे रहा हूँ बच्चे को, शेड्यूल कास्ट का लड़का है, उसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ, उसको जो है उसको गलत तरीके से बात करता हूँ। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में पॉइंट ये है, अगेंस्ट ओबीसी, आई एम ओबीसी, व्हाट विल हैपन इन दैट केस? दिस इज वन पॉइंट व्हिच मे हिट आर्टिकल 14, दिस वन। अब जो इससे बड़ा पॉइंट जो ये आ रहा है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो कहां जाएंगे? पहली बात तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि रेमेडीलेस है, ये आर्गुमेंट किया जा रहा है कि रेमेडीलेस है, ऐसा नहीं है भाई। इसके ऊपर भारत का संविधान है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, वहां डिस्क्रिमिनेशन होता है, यू कैन ऑलवेज गो एनीवेयर। अगर जब भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, आर्टिकल 14 तो सबके लिए अवेलेबल है। ये तो एक विशेष प्रावधान किया गया, इसमें मना थोड़ी किया गया है, वो समझना। लेकिन 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 ये पॉइंट जरूर है उनका कि हाँ, अगर ये डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हम विश्वविद्यालय में कहां जाएंगे? विश्वविद्यालय को उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी जैसे है 2012 के नियम में क्या होता है, जब भी डिस्क्रिमिनेशन आएगा, डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा बहुत ब्रॉड की गई है, जब भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होगा कमेटी बनेगी, कमेटी बन के जो है उस बारे में कार्रवाई कर सकती है, और ये कमेटी को जो है विश्वविद्यालय की कमेटी को, विभाग की कमेटी को अधिकार है, वो ऐसा कर सकती है। नो, इस दिक्कत के बाद जो है, और जिसमें मैं कह रहा हूं कि अगर इसका कोई समाधान करना है तो समाधान पर भी आने के लिए प्रयास करूंगा मैं, थोड़ा सा क्या पॉसिबिलिटी है उसमें। जैसे हम इस पर विचार कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन में के बाद से ओनली वन हटा दिया जाए और अगेंस्ट एनीवन कर दिया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ट्राइब्स इंक्लूडिंग कर दिया जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। इससे कभी कभी ये लोग कह सकते हैं कि भाई आप उनको भी इसमें रख दे रहे हैं जो हमारे खिलाफ काम करते हैं, तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव पॉइंट है। हमारे खिलाफ काम करते हैं अगर, तो आखिर लेकिन आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 को जो है अगर बचाए रखना है तो हमको उनको भी रेमेडी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ रेमेडी देनी। मैं नहीं कर रहा हूं कि रेमेडी इसी प्रकार की हो, लेकिन कुछ ना कुछ रेमेडी उनको देनी पड़ेगी। अब आते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो शब्द है, डिस्क्रिमिनेशन शब्द को बहुत ब्रॉडली बताया गया है, मैं बहुत उस पर नहीं जाऊंगा। डिस्क्रिमिनेशन मींस कोई भी अनफेयर, डिफरेंशियल, बायस्ड ट्रीटमेंट और एनी सच एक्ट अगेंस्ट एनी स्टेक होल्डर, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर एक्सक्लूजन, लिमिटेशन, डिस्टिंक्शन, प्रेफरेंस आप करते हैं, वो जो है ये बहुत बड़ा इसमें बात कही गई, बहुत ही वृहद बात कही गई डिस्क्रिमिनेशन क्या मतलब है। 2012 की जो परिभाषा डिस्क्रिमिनेशन की बहुत छोटी परिभाषा थी, बहुत छोटी परिभाषा थी, इसको और विस्तृत कर दिया गया है। बाकी इससे बहुत सारे डिफिनेशन है, मैं उसमें बहुत नहीं जा रहा हूँ, समय भी हो रहा है। तो ग्रीवांस का मतलब क्या है? ग्रीवांस का मतलब है कोई भी एग्रीव्ड पर्सन ग्रीवांस कर सकता है। अब यहाँ फिर जो है ये सबके ऊपर लागू हो रहा है, केवल SC ST के ऊपर लागू नहीं हो रहा, सबके ऊपर लागू हो रहा है। उसके बाद इसमें क्या है, स्टूडेंट का मतलब वही नहीं है जो विद्यार्थी है, बल्कि जो एडमिशन लेने आया है वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, अब आगे जो 2-3 पॉइंट है भाई, इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है, ये बनेगा, ये सब बातें बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है। मैं 2-3 उन बिंदुओं को उठाऊंगा जिसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पहला तो कंफ्यूजन ये है कि इसमें भाई ये तो क्रिमिनल लॉ है, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है, समझ लेना है।
इट इज नॉट ए क्रिमिनल लॉ। तो कोई ये ना समझे कि क्रिमिनल लॉ तो SC ST एक्ट है 1989 का, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर है जिसके खिलाफ शिकायत की जाएगी? ये भी गलत बात है। मेरे से एक अध्यापक महोदय ने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है भाई वो तो उस लोगों पर है, जैसे मान लीजिए कि लड़की ने शिकायत कर दी कि टीचर जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं जेंडर आधार पे। ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर है जो शिकायत करता है, सिविल लायबिलिटी है। इसी प्रकार अगर कोई शेड्यूल ट्राइब OBC कहता है कि मेरे खिलाफ किसी ने जो है इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर है जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ ये जो मैं कह रहा था कि ये दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो कहना चाहता हूँ। तीसरी बात है वो ये है कि जो ये जो सेंटर बना है, अब इसमें एक बात कही जा रही है कि बार बार इसका दुरुपयोग होगा। दुरुपयोग तो किसी भी लॉ का होगा, जस्ट बिकॉज दुरुपयोग होगा इसलिए लॉ को आने से रोक देंगे नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे हमको पता है कि भाई हमने जो है मान लीजिए कि कोई ऐसी घर में कोई चीज हम ला रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे के पास आप चाकू नहीं रखते हैं, पर चाकू रखना बंद थोड़ी कर देंगे। सब्जी काटनी है, सेव काटना है, तो क्या करते हैं हम? चाकू की पहुंच छोटे बच्चे से अलग करते, दूर करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार चूंकि ये कानून ऐसा है जिसमें कुछ एप्रीहेंशंस हैं जो जेन्युइन एप्रीहेंशंस हैं, दुरुपयोग के जेन्युइन एप्रीहेंशंस हैं, तो इसलिए मेरा समझना है कि इस कानून को एड्रेस करने की जरूरत है। ये एक पॉइंट में कह रहा हूं। इस पूरे डिबेट में एक और पॉइंट में कह रहा हूं जो कि इसमें कहीं आ नहीं रहा है और मैं चकित हूं क्यों नहीं आ रहा है। वो पॉइंट है, यूनिवर्सिटी जो है दो प्रकार की है। एक यूनिवर्सिटी तो केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय ले लीजिए, एक वो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज है जो कि जनरल सामान्य कानून से चलती है, दूसरी वो यूनिवर्सिटीज है जो माइनॉरिटी कानूनों में चलती है। अब जो माइनॉरिटी कानून है, माइनॉरिटी के जो विश्वविद्यालय हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले लीजिए, आप जामिया मिलिया इस्लामिया ले लीजिए, SC ST OBC टीचर इक्वल टू 0। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SC ST OBC स्टाफ इक्वल टू 0। 2024-25 का जो उनका एनुअल रिपोर्ट है, पेज नंबर 90 पे ये बात साफ साफ कहती है। तो सोशल जस्टिस की जो जिम्मेदारी है सभी विश्वविद्यालयों की है, वो BHU की भी है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय की भी है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी है। ये सही बात है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उनको छूट दी गई है, और छूट देने का ये मतलब थोड़ी है कि आप जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। सोशल जस्टिस इज समथिंग व्हिच इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एक क्या होता है कि हमको एक सुविधा दी गई है, सुविधा देने का मतलब नहीं रिप्रेजेंटेशन हम बंद कर दें। लेकिन इस डिस्कशन में ये बात भी सामने आनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि 1200 के आसपास टीचर्स हैं वहां पे AMU में, और SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन वहां 0 है। ठीक है, 1200 के आसपास नॉन टीचिंग स्टाफ है AMU में, पर SC ST और OBC का रिप्रेजेंटेशन 0 है। विद्यार्थी ले रहे हैं, वो 50% विद्यार्थी वो ले रहे हैं, ये खुशी की बात है। मैंने वहां लोगों से 2 अथॉरिटी संपर्क किया कि मुझे बताइए, मैं कल बोल, मैं आपके पक्ष को बहुत फेयरली रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम थोड़ा रिप्रेजेंटेशन करते हैं और वो बहुत पॉलिसी वाइज नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो है ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का ही बहुत बड़ा ग्राउंड है, इस ओर भी सबका ध्यान देना चाहिए। आखिरी बिंदु, इसका समाधान क्या है? देखिए क्या है कि लॉ हमेशा ही दवाई है। मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। लॉ एक दवाई होती है। एक व्यक्ति बीमार है, उसको दवाई है, दवाई पर जिंदगी भर नहीं चल सकता वो। उसको सुबह उठना होगा, टाइम टेबल ठीक करना होगा, टहलना पड़ेगा, अच्छा भोजन करना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। तो समाज को इस दिशा में लगना पड़ेगा। ये पूरा समाज हमारे शरीर की तरह है। एक अंगुली को चोट लगेगी तो पूरे शरीर को दर्द होता है। तो समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम सबको ही फील होना चाहिए कि ये हमारी है, और इसलिए समाज को इसमें लगना पड़ेगा। सरकार ही सारा काम नहीं करेगी, वो रिजर्वेशन पॉलिसी दे सकती है, वो स्टाफ दे सकती है, वो स्कॉलरशिप दे सकती है, पर हमारी जिम्मेदारी है। मेघराज जी के साथ मिलकर के हम लोगों ने थोड़ा प्रयास किया अपनी तरफ से। क्या प्रयास किया है कि जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, और मैं कई पहले भी कर रहा हूं और आगे भी आप सबको ऑफर करता हूं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए, उनकी एकेडमिक जो उनका सपोर्ट देने के लिए हम लोग मिलके आगे आए। जैसा हम कर रहे हैं मेघराज जी के साथ, कि जिसका भी कोई इंटरव्यू पढ़ रहा है, हम लोग पहले उनका मॉक रखते हैं, और मॉक रखने के बाद उनको हम ट्रेन करते हैं, उनको प्रयास करते हैं, और सौभाग्य से उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समता मंच को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और कहते हैं ना कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा एक दीप जलाएं। आइए मिलकर के एक दीप जलाएं कि जो भी
इस कमजोर वर्ग का बच्चा है, जो भी कमजोर वर्ग का बच्चा, चाहे किसी कम्युनिटी का बच्चा हो, कमजोर वर्ग का बच्चा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए हम थोड़ा तेल लेंगे, उसकी क्लासेस, उसके ज्यादा क्लासेस लेंगे, उसकी इंटरव्यू लेंगे, उसका प्रिपरेशन ज्यादा कराएंगे, उसका डिसर्टेशन वर्क को ज्यादा अच्छे से देखेंगे, उसके पीएचडी वर्क को ज्यादा अच्छे से देखेंगे, ताकि जब वो परफॉर्म करने जाए अच्छे, तो लोग कह सके कि हाँ, इसकी परफॉर्मेंस जो है इट इज एट पार विथ एवरीवन, एट पार विथ एवरीवन। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने अवसर दिया, समय भी दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपके जो भी प्रश्न होंगे उसका खुलकर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Professor Anuragdeep sir. Now I invite Dr. Nafis Ahmed sir. He is teaching in South Asian University as an associate professor. Sir, अपने विचार रखिए, और सर थोड़ा ये भी देखिए कि जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है वो उसके स्टेटस को लेके लीगल क्लैरिटी है कि बिकॉज दैट इज नॉट गवर्न बाय अदर थिंग्स लाइक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। सो उस रिगार्ड से साउ में क्या है वो भी थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। सर योर माइक इज ऑफ। But before I proceed further, I would like to put on record so far, because there was a reference of the Aligarh Muslim University and representation of OBCs, STs, and SCs. So over there, so far the teaching faculties are concerned, non-teaching staff is concerned, and other important sectors, including the D grade, I mean class D of the employees in Aligarh Muslim University are concerned. We find there are, I am not talking about the SCs and STs alone. Yes, I concur with Professor Anurag. Yes, there is a requirement of a further representation of scheduled caste and scheduled tribes in Aligarh Muslim University. But so far the OBCs are concerned, we are having plenty of representation so far. The OBCs are concerned, including irrespective of the religion. Muslim OBCs, Hindu OBCs are there as a member of the staff, including from I mean the higher caste, what you call from the Hindu community. People are there. I have been the student of Professor Virendra Singh Rekhi, Professor Dayaram, Professor Hari Ram Gupta Sahab, Professor and my learned colleagues Sunil Kumar is also, or Salil Kumar is also there. So I am simply talking about the Faculty of Legal Studies. So the OBCs as well as the upper caste representation has always been there, and particularly the people from the upper caste from the Hindu community are in plenty in the Department of Medicine, Department of Engineering, Department of Sanskrit, even Department of Hindi, and there are many other important departments, and even we had the chance even to have Hindu professors in the Department of Urdu in the past. So there has been a lot of representation, and Aligarh Muslim University represents an inclusive character. And I, as a teacher over there, I served as a professor for 14 years, Aligarh Muslim University. So I was always surrounded by the non-Muslim students, and they were, and it was the duty of even today that they have to what you call additionally work for the betterment and empowerment of the non-Muslim students in the Aligarh Muslim University, whatever may be the scenario, whether it is the corporate life, whether it is the professional life, whether it is the student life. So everywhere we have been contributing a lot. Having said this,
it was simply a clarification from my side because of my background. I have been a student of Aligarh Muslim University for 14 years. Again, 12 years I have been there as a student, 14 years as a teacher. Now in 2011 I have joined South Asian University, and that is an intergovernmental institution. That is an international university that enjoys the diplomatic community. And learned Professor Anurag Deep is also my colleague in the Board of Studies. So he's our honorable member of the committee, and he has been contributing a lot in various sectors. So far the Faculty of Legal Studies of the South Asian University is concerned. So thank you very much. With these understandings, I directly would like to put forward my submission regarding the merits as well as its positive aspects, as well as what you call strength of these UGC regulations. But before I proceed further, I would like to put forward that please, I am not going to be subjective. We have to ultimately achieve objectivity, and that idea of objectivity has already been articulated by my learned colleague. So therefore, when we are talking of the merit of these UGC's regulations, which have been exclusively designed to establish and envision the idea of equity and equal what you call opportunity centers and their establishment in higher educational institutions. So these regulations, my dear friends, represent a serious, profound what you call attempt to institutionalize idea of constitutional trust and constitutional morality. So far the functioning of these institutions are concerned, and it is basically, you my dear friends, shifting from discriminatory what you call or discretionary guidelines to enforceable rules. That is the mandate so far the strength of the newly published or newly gazetted regulations, UGC regulations 2026 are concerned, which could address the perennial rise in discrimination complaints, which to a very great extent has already been, addressed by my learned colleague. But it is equally important that we must what we call, argue the idea of, inclusion of the leadership accountability. That is something which is very important in these, regulations. At the same time, anti-retaliation measures must also be, revisited. And these are the, some of the important what we call, positive features, and the coordination with external authorities. For example, legal aid services, strengthening protections for the marginalized stakeholders in this kind of what we call regulations. From a left-leaning perspective, though I am not at all espousing or glorifying any kind of ideological affiliation or a particular indoctrinating some kind of ideological aspect, but it is important that the regulations align with the constitutional equality. Constitutional equality is more important, as it has already been pointed out by my learned colleague, particularly in the context of Article 14, and that what you call respond to Supreme Court observations on caste discrimination, providing a foundation for monitoring and enforcement that could be built upon. Therefore, we should also ponder over what exactly are the weaknesses in these regulations. Though to a very great extent, even the weaknesses have also been, pointed out. But my, submission is, despite the fact we believe so far the constitutional intention, constitutional trust, constitutional, vision, whatever, with these, values and the constitutional exceptionalism that has already been, there, and the specialized legislations have also been, enacted in the form of the SC/ST Act, which was also, referred by my learned colleague of the 1989. It is important to understand the definition of discrimination, which is narrowly confined to specialized or specific grounds. So on the grounds only of, this has also been pointed out, religion, race, caste, etc., excluding economic vulnerability, language and ethnicity. Despite these being referenced in duties and known to affect groups like the northeastern students or non-Hindi speakers, this creates internal inconsistencies. Objectives mentioned so far the economic weaker sections and socially backward classes are concerned, but the core definition omits, my dear friends, these what we call values, potentially limiting the remedies and leaving structural exclusions unaddressed. Caste-based discrimination is explicitly defined only against SC and STs and OBCs, excluding general categories
students, which has fueled protest over perceived unfairness and risk of misuse with what we call, provisions for penalizing false complaints. So this particular, gray area must also be taken into consideration. But regulatory framework, my dear friends, relies heavily on institutional self-regulation, which may lack independence amid power, what we call, imbalance, could overburden under-resourced state institutions in state universities with procedural demands leading to the compliance without investigative, what we call, protocols are vague. For example, no standards for evidence or witnesses have been, contemplated. And my learned friend has also, alluded to this particular point in the form of what we call the, burden of proof. Privacy safeguards, for example, are limited, and there is no explicit anti-retaliation framework with clear consequences. So critics argue, including what some of your colleagues, it is the dilution of 2012 regulations which cover broader discrimination forms and issues like unfulfilled reservations, omitting these some kind of favor cover broader discrimination forms and ultimately focus on perception rather than lived what we call realities. Exclusion of elite institutions like IITs, IIMs. I would like to draw your attention. These institutions undermines universality argument and idea or doctrine of universality, and living committee composition to institutional heads risk bias without any kind of a democratic input from other stakeholders or students or staff. Broader consensus must include potential for episodic enforcement, administrative fatigue, and cynicism if not supported by capacity building. So in my understanding, my dear friends, so if I comprehensively and holistically, if we what we call assess, so my understanding would be that these regulations are well-intentioned but flawed instruments, essential for tackling entrenched what we call idea of caste discrimination, but hampered by narrow definitions, exclusions, and vague mechanisms that invite misuse and in uneven what we call applications. Further, I would like to put on record modifications are required, such as broadening discrimination grounds, adding safeguards against false complaints limited to malicious intent, and extending to all the application of these regulations must be what we call extended to all the institutions, irrespective of their status, whether they are the institutions of excellence, whether they are what we call the institutions of specialized higher learning, and ensuring democratic committee formation could enhance efficacy without any kind of undermining core goals. In a diverse society like India, my dear friends, we believe in the diversity and unity in diversity. We must prioritize, sustain